Hello everyone. So we were doing project on English and Bangla fake news classification. Performing classification for English as a language is not a tough job because we are available with libraries, we are available with the tools to perform the classification. However, for other language than the English, it requires the similar availability of the libraries. Like for Bangla language here, we should be having the flexibility to perform for cleaning of the data, your entire process, that is software, your stopwords removal, punctuation marks, hyperlink, and whatever we have seen in the previous sessions. So we require a library that should support, we require a tool that should support for that. In the previous class, we did started the analyzing Bangla language. Okay, and I told you that there is a toolkit to perform processing of Bangla language also. That is called as BLTK. Okay, just like we are having NLTK, Natural Language Toolkit, we do have BLTK, Bangla Language Toolkit. Okay, so I tried again for that, and I installed it again. You can see the installations here. Fine. So let me perform this thing again because I have executed the code, and re-execution is required here. Okay, so I'm installing the toolkit for the Bangla language, BNLP. Okay, and all other supporting libraries. So your BNLP is another natural language processing library for processing Bengali text. It can perform tokenization of part of speech tagging, sentiment analysis, everything it can perform. INLTK is a package for Indian Natural Language Toolkit. Okay, it provides NLP tools for multiple Indian languages, including Bengali. See, performing processing for Indian languages, again, I'm saying, because in India we do speak many languages. Okay, and obviously, someone do quote a text in their language according to the region. Right now, whatever be the social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram, they are strong enough to analyze the content, they are strong enough to analyze the text, they can translate those content or the text one language to another language, they can do, and their translation is specific for English. Okay, any other language can be translated into English, they can do. Fine. In fact, our LLMs also are strong enough to perform this task. Okay, so I have installed Bangla also. I have installed Indian languages toolkit also. Okay, and I am having one more Bangla NLTK. This one to process Bengali text. That's what I am having. Okay, so I have installed all these libraries, and then rest are my
dependencies. These libraries, NumPy, Panda, Seaborn, Matplotlib, these are my dependency libraries. Okay, and some basic like to remove the stoppers to perform the tokenization, NLTK, string, regular expression, RE. So these are word cloud. So we have seen these libraries in the previous projects also. Okay, so I have put here, any library is there for Hindi? Okay, we can pick up from this. Okay, what we came to know here is INLTK. It's for multiple Indian languages, which includes Bengali. So the thing is, we have to explore more in INLTK. We will be having this library for the Hindi. Okay, it requires again the exploration for Sanskrit also, for Hindi also. We have to acknowledge more. All right. For research perspective, there might be corpus available, there might be library available. Okay, not that much strong, but yes, there will be libraries to perform the task with some flexibility. There should be. If Bengali is there, then obviously we will be available with Sanskrit and Hindi also. Okay, fine. So these are the basic libraries which I have imported. Here is the data. Okay, fine. So let me run this code also to get all the libraries, and then this is the data which I have accessed. That is your Bengali data set. And here I will print the Bengali data. Okay, fine. That is the head, first five rows, then tail, the last five rows. You can see in our data we are having headline and the content. That is your these two text columns. I am also having a label that is fake or non-fake. Okay, one means fake, zero means not fake news. Okay, fine. This is the shape of your data 14,000. These are the columns which are present in your data: category, headline, content, label. You check that there are no duplicates present in your data. Okay, there are no null values present in your data. Okay, and then you printed the information for your data, df info. Okay, that means all are of object type. The label is of float type. Okay, that is 0, 0.0, 1.0. That will convert it into integer format ahead. That will do. Okay, so this is df dot describe the description for the numerical column. Okay, we are only having the label here, and then this is the number of unique values in the category. That means what kind of news we are available for in our data. That means national news, sports news, finance news, entertainment, all these are present. This is the value counts for them. Okay, the highest number of news are for national. Okay, then I made the count plot for it. Here is a count plot for it because it's categorical in nature. So I made count plot for it. I also made pie plot for it. Okay, this is the pie plot for it. 36.6% is the national news, then international is 13.1. The minimum is related to technology. 1.7% news only. Okay. Then for label also, 0 and 1 we are having the label. Value counts, that means okay, 10,001 45370. That means it's quite clear your data is imbalanced. Either you can say it as unbalanced data. Okay, before performing classification, we have to perform the balancing of our data. Meanwhile, let me make the count plot for it. This is the count plot. Okay, and this is the pie plot for it. Okay, so 68% 1, 31% 0. So obviously from here itself, it's clear you are having unbalanced data.
Okay, I converted the label into integer. There is no sense that keeping it into a float 0.0, 1.0, that doesn't make any sense. So let it they get converted into integer type. Okay, headline and content both are having the text, so there is no sense of keeping both of them separate either. Okay, there is one thing, either you can perform the analysis over headline, either you can perform the analysis over content, and the best thing is you merge these two because both are containing your text. So it's better merge these two and make a new column called as text. Okay, so that's what I did. I created a text column, and then for my analysis, I only took text and the label. That's it. Only text and the label. Okay, so I am available with the text here. You can see. Okay, that is Bangla, which is having the headline and the content which is present in the headline. So I have merged both of them, concatenated both of them. Okay, so this is my Bangla content. See, I don't know Bangla. I can't understand this language. Maybe if anyone from here who can understand the Bangla can tell what is written here. I took this problem statement because I want to. I have done a lot of work on English, so English is saturated. I want to experiment something new, so that's why I picked this particular problem statement, this Bangla language. Okay, if you can do on work on Bangla language, then you can work on any other language, Hindi, Sanskrit, whatever you want to do, you can. Okay, so this is my text and the label. Okay, then I performed character count, word count, sentence count. The codes are very much simple. You can split your text. Okay, dot str dot length. That means convert that into a string and then calculate the length of the string. That will be the character count. And then word count, string split str length. This will be the word count. That means you have to tokenize. They have to tokenize. Okay, str split. Split means you have to split text on the basis of white spaces. So wherever you are having a white spaces, just pick up those words. Okay, and then find the length. What is the total length? And sentence count. Okay, again you have to tokenize the text. Okay, you have to tokenize the length of NLTK dot sentence tokenize on the basis of sentences. So wherever you are getting the exclamation something, okay, so that will be the sentence count. Now let me share my entire screen. There might be some challenges here. I'm sharing my entire screen. Okay, whatever be the functionality right now we are using now, that we are using according to English. Okay, we are taking these terms from NLTK, not from Bangla language. Okay, we are just experimenting here what can be possible. So these two I can, okay, especially this one I can understand. Okay, maybe this one also. But sentence tokenize is from NLTK. Okay, and sentence tokenize means, for example, if I say, hello, how are you? Okay, question mark. I am fine. Full stop. So sentence tokenize, is it considering question mark also, full stop also, exclamation also? Because in languages like Hindi and other, I guess इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं कुछ ऐसा. I think आपको ज़्यादा पता होगा यदि मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ तो. इफ़ यू नो दिस थिंग, आप मुझे बता सकते हैं क्या बोलते हैं इसे. ये एक्सक्लेमेशन तरीके का लगता है, लाइक दिस. ओके, टू एंड द हिंदी सेंटेंस. तो आई गेस इन इंग्लिश हमको फुल स्टॉप लगाते हैं. बांग्ला में भी क्या ये लगता है?
Okay, and what you are doing here is you are mentioning sentence tokenize. So sentence tokenize में वो question mark and all these things with the Bangla language, is it applicable? तो ये मेरा doubt पे है थोड़ा, ये code. Okay, it is in doubt. आई एम ओके विद दिस, क्योंकि ये वाइट स्पेसेस पर स्प्लिट कर रहा है, तो वी डोंट हैव एनी इशू रिलेटेड टू इट. यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है. एनी वेज आई हैव रन दिस कोड. ओके, आई हैव रन दिस कोड, आई गेस 23, एंड दिस इज ओके डन. कर दिया एंड इसका प्लॉटिंग भी कर दिया. आई मेड अ हिस्टोग्राम वॉट एवर जो भी उसने एनकाउंटर करा. ओके, आई मेड द प्लॉट फॉर दम. This is the histogram for character count. This is the histogram for word count. And this is the scatter plot between word count and the character count. Okay, so this much I made. जो भी अभी समझ में आया मुझे initially I made. Okay, then this is the correlation matrix between character count, word count, sentence count, and the label. I just want to check the correlation. So what I found is label के साथ तो किसी का कोई correlation is not been good, looking good. No. If I check the correlation between the label and the character count, word count, sentence count, you can see this is label with character count only 0.02. दिस इज 0.01, दिस इज -0.06, एंड जो लेबल के साथ तो 100% ही होगा. तो ये देखिए आप, विद लेबल दे डोंट हैव एनी कोरिलेशन, लेट इट बी. दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट प्लॉट ऑल्सो, बट आई जस्ट मेड इट. ओके, सो लेट मी रन इट, बता देते हैं. ओके, डन. देन आई सेपरेटेड फेक एंड रियल लेंथ. Okay, fake length and the real length. Okay, so just select label 0 to find the fake length and 1 for the real. Okay, here it's considering 0 for fake and 1 for real. Okay, initially if I said like 0 is not fake and 1 is fake, so you can correct it. Okay, whatever we are tagging, just mention it accordingly. Okay, and box plot has been made. I made a box plot. Here you can see fake and the real box plot with respect to the length of the text. Okay, this could be like and can be considered as good interpretation. That means if someone is writing fake news, so how much length it took and how much length is in real news. Okay, so this could be a good part. Okay, we can consider for our analysis. Here I made a box plot. Okay, and then histoplot between fake and the real distribution, length distribution. This is the histogram. This also I made. Okay, because length तो कोई इशू नहीं है, लेंथ निकाल लो आप, कोई इशू नहीं. फॉर इंग्लिश ऑल्सो वी डू द सेम, ये कर लो आप. एंड देन आई प्रिंटेड द स्टैट्स फॉर इट. what is the mean, median, standard deviation for the length of fake and for the real Bangla text. Okay, that's what I have printed. Fake stats and the real stats ये निकाल दिया. ठीक है, तो मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल दिस थिंग्स आई डिड प्रिंटेड. उसके बाद ओके, दिस कोड आई एम इग्नोरिंग हियर. ओके, उसके बाद सी मेरा df2 तो यही है. ओके, df2 that is having text in the label. Okay, then I imported these libraries जो बांग्ला का मैंने इंस्टॉलेशन करा है. ओके, बांग्ला कॉर्पस विच आई हैव इंस्टॉल्ड BNLP. Okay, so I imported these libraries. Whatever be the analysis I did above now is a general analysis.
Okay, just identifying the number of characters, number of words, sentences, length of the fake, length of the real. So that's what just a general analysis I did. Now I want to indulge deep in it, and I want to focus according to Bengali library, and then we will check out. We will make the word cloud and rest of the things. Let's see. I imported all the libraries, okay, and from Bengali corpus, I'm taking B and LP import Bengali corpus as corpus. So corpus means corpus is a collection of words. Corpus is a database. It's a database where Bengali words are present. We do have corpus for different languages: English also, French also, Japanese also, German also, Russian also. So हर एक लैंग्वेज का कॉर्पस होता है. आपने बीएनएलपी से बंगाली कॉर्पस को ले लिया, यू टुक दैट डेटाबेस, और आपने बोला कि भाई ये बताइए, काइंडली टेल कि इस कॉर्पस में स्टॉप वर्ड्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द स्टॉप वर्ड्स इन बंगाली, हाउ यू कैन फाइंड द पंक्चुएशन मार्क्स इन बंगाली, हाउ यू कैन प्रिंट द लेटर्स, हाउ यू कैन प्रिंट द डिजिट्स, हाउ यू कैन राइट द वोवेल्स इन बंगाली. तो ये रहा. समझ में तो मेरे को भी नहीं आएगा, मुझे ये नहीं पता आपको भी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, बट ये सब हैं. Okay, these are the stop words present in Bengali. Okay, and these are the punctuation marks. तो punctuation marks तो वही हैं जो अंग्रेजी वाले लग रहे हैं, ठीक है. And these are the numbers, these are the digits which are written in Bengali. These are the letters. Okay, in Bengali letters है ना, वो जैसे इंग्लिश लेटर होते हैं ABCD, हिंदी होते हैं A I E I O U, ठीक है. और फिर ये बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं, तो ये कॉर्पस में वी आर हैविंग, तो आई जस्ट प्रिंटेड. चलो, अभी एक बात है, क्लीनिंग नहीं करा है ना बंगाली का जो टेक्स्ट है. आई हैवंट परफॉर्म द क्लीनिंग, उसको क्लीन नहीं करा मैंने. आई एम जस्ट मेकिंग द वर्ड क्लाउड. ओके, आई एम मेकिंग द वर्ड क्लाउड. वट एवर आई एम अवेलेबल विद द टेक्स्ट ना, आई एम मेकिंग द वर्ड क्लाउड. ये देखिए. सो वर्ड क्लाउड में आई एम पिकिंग अप अ फॉन्ट. ओके, टू शो द वर्ड क्लाउड एक फॉन्ट ले रहा हूं मैं. फॉन्ट मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर. आई डू हैव सो मेनी फॉन्ट्स हियर. ओके, दीज आर द फॉन्ट्स. सो आई एम अवेलेबल विद देम. तो इसमें से आई एम टेकिंग अ फॉन्ट रेगुलर, हैक रेगुलर. दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग. एंड वर्ड क्लाउड का विड्थ, हाइट, ये सब बना दिया. बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया. एंड आई एम कंसिडरिंग द एंटायर टेक्स्ट. ओके, एंड हियर आई एम मेकिंग द वर्ड क्लाउड एज यूजुअल, जैसे इंग्लिश में बनाते हैं वैसे यहाँ पर भी बना रहे हैं. ओके, द सेम वे. ओके, तो जस्ट लाइक वी मेक देयर ना, सेम यहाँ पर भी बना रहे हैं. ये पूरा बांग्ला टेक्स्ट का वर्ड क्लाउड है. Okay, so I just joined the entire text and I'm making the word cloud for it. Okay, and result थोड़ा सा shocking है. Let's see, अभी you will get the result. Okay, तो here it will display the word cloud for the entire, and then I will be making the word cloud for label 0 and label 1 also. That means I will take the fake. ओके, ये देखो, ये वर्ड क्लाउड आया. आप बोलेंगे सर वर्ड्स तो दिख ही नहीं रहे हैं. सर हाँ, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं. ये शॉकिंग है. मतलब हाउ इंग्लिश में यू सी द वर्ड्स, ओके, विच इज हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यू सी द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द फॉन्ट. अब यहाँ पर जो फॉन्ट लिया है, ओके, यहाँ पर जो फॉन्ट लिया, आई टुक इज लाइक दिस वन, हैक वाला जो है, हैक बोल्ड इटैलिक एंड वी आर अवेलेबल विद द फॉन्ट्स. अब ये फॉन्ट्स बंगाली को कितने सूट करते हैं, ये मुझे अभी उसने बना के तो बता दिया कि ऐसा वर्ड क्लाउड बन रहा है. वर्ड्स नज़र नहीं आ रहे हैं, बट जैसे तैसे भाई सक्सेस तो मुझे ये मिली कि मैं बना पा रहा हूँ.
एटलीस्ट आई एम एबल टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। ओके, ये मैं बना पा रहा हूँ। अभी आगे और एक्सप्लोर करेंगे, जब डेटा क्लीनिंग करेंगे देन अगेन विल एक्सप्लोर इट, विल चेक आउट। ओके, अभी इतना तो हो पाया है। एंड देन हियर आई टुक 0 and 1 बोथ। ओके, 0 and 1 बोथ दोनों ले लिया, इनके भी वर्ड क्लाउड बना दिए मैंने। दैट मीन्स फेक न्यूज का और रियल न्यूज का आई मेड अ वर्ड क्लाउड। द कोड इज ऑल सेम हियर ऑल्सो, आई टुक द सेम फॉन्ट हैक रेगुलर एंड width ऑफ द वर्ड क्लाउड, हाइट ऑफ द वर्ड क्लाउड, बैकग्राउंड कलर एंड ऑल दिस थिंग ना, वो सेम है पूरा, कोई इशू नहीं है। ओके, इट्स ऑल सेम। तो यहाँ पर अभी आई प्रिपेयर द वर्ड क्लाउड। ओके, देख लेते हैं हाउ इट्स मेकिंग। ऑलराइट, ये सेपरेट करके दोनों का आ जाएगा। यहाँ इस तरीके से वर्ड क्लाउड बनते हुए नज़र आ रहा है। ओके, इन जनरल हमें जो देखने की आदत है वो वर्ड्स की फॉन्ट और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ होती है। दैट्स व्हाट वी सी इन द इंग्लिश। हियर वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, जस्ट वी आर सीइंग द रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स। ये देखिए, ये फॉर लेबल 0 का है और ये फॉर लेबल 1 का वर्ड क्लाउड है। नाउ विच वर्ड्स रिप्रेजेंट व्हाट इन दिस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स, वी डोंट नो। अभी ऐसा कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, बस बन गया है हमारा वर्ड क्लाउड। और ये बॉक्सेस क्या बता रहे हैं, ये इसके अंदर वी आर हैविंग अ बॉक्स एंड देन अगेन वी आर हैविंग मोर बॉक्सेस इनसाइड इट, ऐसा करके है। अब ये रिलेट कैसे कर रहा है, हाउ इट्स रिलेटिंग टू द फॉन्ट साइज एंड आर इट इज आर वर्ड्स आर बंगाली वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड हियर, वो थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। ओके, क्या ये वर्दी भी है कि नहीं है। वर्ड क्लाउड बना तो दिया, वेदर इट इज यूजफुल और नॉट कि ऐसे ही बना के रख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। द मोस्ट 30 कॉमन वर्ड्स यूज्ड इन योर टेक्स्ट। यहाँ पर भी कोई ऐसा इशू नहीं है, मतलब बांग्ला एनएलटी के लगाने का। ओके, व्हाट आई डिड इज, इट्स वेरी सिंपल। You joined the entire text, then you converted your text into lowercase. That means you considered the words, okay, जो भी ये कॉम्बिनेशन में W और S, ये रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर आप लिखते हैं W एंड द S। जहां पर इस टाइप का पैटर्न मिला, वेर एवर आई फाउंड सच काइंड ऑफ पैटर्न, आई हैव रिप्लेस इट विद एम्प्टी, वाइट स्पेस से आई रिप्लेस्ड इट। ठीक है, स्मॉल वर्ड्स एंड समथिंग लाइक दैट, तो आपने उसको रिप्लेस करा। यू कन्वर्टेड इट टू लोअर केस, देन यू स्प्लिटेड इट and then you counted. There is a library called as counter, so that counter library can count the number of words present in a text, वो कर लेगी काउंट। और उस काउंटर में से आपने टॉप 30 वाले वर्ड्स यू पिक्ड, दैट आपके ऊपर है यार, आप टॉप 10 ले लो, यू कैन टेक टॉप 20, यू कैन टेक टॉप 30, इट्स अप टू यू। सो यहाँ पर आप 10 भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। ओके फाइन, सो लेट मी रन द कोड। सो आपने स्प्लिट करा टेक्स्ट को एंड देन you, with the help of a counter library, you counted. So these are the 30 words, top 30 words which are used, which are the most commonly used in Bangla अभी अपने पास जो है। ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज, आप 0 और 1 में व्हाट आर द मोस्ट 30 वर्ड्स यूज, दैट मीन्स रियल में और फेक में आप अलग से भी सेपरेटली यू कैन फाइंड। ये कोड उस चीज के लिए है। ओके, दिस इज द कोड फॉर real and the fake. So I took fake text from the Bangla, I took the real text from the Bangla, and this is the code to perform the counting of number of words. ठीक है, तो these are the words which are mostly used in the fake top 30. These are the words which are mostly used in the real text. ये भी हमने कर लिया। इफ यू वांट टू काउंट द कैरेक्टर्स, यस यू कैन डू दैट, ये भी आप कर सकते हैं, यू कैन काउंट द कैरेक्टर्स।
ओके, तो अगेन विद द सेम थिंग, फिल्टर टेक्स्ट str लेंथ, ये कैरेक्टर काउंटिंग के लिए है। ओके, एंड वी आर कैलकुलेटिंग द सम, तो सम डिवाइडेड बाय टोटल, है ना, लेंथ, जो लेंथ है तो एवरेज आ जाता है। तो हियर वी कैलकुलेटेड द टोटल कैरेक्टर्स, वी कैलकुलेटेड द एवरेज कैरेक्टर्स, एंड वी आर रिटर्निंग बोथ ऑफ देम, और प्रिंट करवा रहे हैं अपन। सो दिस आई डिड फॉर फेक एंड रियल बोथ, यहाँ से। Okay, so you can count the characters, you can find the length, the entire length of the text, and you can divide the sum, that is the total characters, divided by the length of the text. So sum divided by length, ये आ जाता है average. Okay, so that's what I'm printing. तो zero के लिए भी, one के लिए भी I printed. So total characters in fake is 810839. Average है 1787. रियल के अंदर इतना है, एंड एवरेज इज 1848। ओके, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। हो सकता है कहीं ये यूज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इफ एनी वन इज राइटिंग द फेक कंटेंट, ओके, सो वी कैन फाइंड बाय टेकिंग टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, एक ट्रेंड तो निकाला जा सकता है। सो दिस मे बी यूजफुल बाय लेंथ कैलकुलेशन। Okay, and word count also. This is the word count. How many words are there? Total words and the average words. ये भी count कर लिया. These are the total number of words in the fake. These are the average words in a fake. And these are the total words in real. And these are the average. Logic वही है. बस पहले आपने you did perform filtered text str length. Now you are performing str split, है ना? You have to split each and every word in form of tokens, and then you have to calculate the length of the token. That's what you have to do. ओके, तो आपने वर्ड काउंट करा, ये फेक, दिस इज फॉर फेक, दिस इज फॉर रियल, और आपने एवरेज निकाल लिया उनका। हो सकता है मदद करे। एवरेज सेंटेंस लेंथ ऑल्सो, तो सेंटेंस लेंथ में तो आपने सिर्फ एल ई एन लगाना है और कुछ नहीं करना है। ओके, ये आपकी एंटायर लेंथ, ठीक है, और ये आप मीन निकाल सकते हो, एवरेज। सो दिस इज नॉट एवीजी एलियन, दिस इज नॉट एवीजी, दिस इज जस्ट अ लेंथ। ओके, दिस इज जस्ट अ लेंथ, दिस इज एवरेज लेंथ। ऑलरेडी फॉर्मूला है, आप लगा सकते हो। सो 1829.24, दिस इज एवरेज लेंथ ऑफ द एंटायर टेक्स्ट। तो अभी सिर्फ आप जो गेम कर रहे हो वो आप ये है, यू आर जस्ट फोकसिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द करेक्टर, देन नंबर ऑफ वर्ड्स, एवरेज करेक्टर, सेंटेंस लेंथ, तो ये आप कर रहे हो रियल में, फेक में, व्हाट दे आर। तो अभी इंग्लिश की ही एनएलटीके का जो बेसिक्स होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, स्ट्रिंग, यू आर यूजिंग देम, एंड यू आर just performing a simple analysis, ठीक है, दैट्स व्हाट यू डिड। अब आफ्टर दिस जो नेक्स्ट है, अब मैंने df2 का कॉपी कर लिया। आई क्रिएटेड कॉपी ऑफ माई डेटा फ्रेम एंड आई मेड अ न्यू डेटा फ्रेम df3। ओके, दिस इज व्हाट आई मेड, ये बना लिया। ऑल राइट, एंड देन आई नीड टू परफॉर्म I need to perform cleaning of my Bangla text. Abhi tak I haven't performed the cleaning. So far I haven't performed the cleaning. Whatever I just doing is I just performing a general analysis of my data by finding the length of the characters, sentence, words, the general analytics I'm doing. From here, let's see how to clean the Bangla text. So I am having beautiful soap library. This beautiful soap, na, this is for website. ये टैग्स वगैरह एक्सट्रैक्ट कर लेती है, ब्यूटीफुल सोप। ओके,
तो ये वेबसाइट के लिए है, HTML टैग से यदि रिमूव करना है उनको एक्सट्रैक्ट कर लेगी. सो इफ यू आर हैविंग एनीथिंग इन योर टेक्स्ट लाइक हाइपर लिंक एंड ऑल दीस ना, तो वो ब्यूटीफुल सोप की मदद से यू कैन एक्सट्रैक्ट और उनको रिमूव कर सकते हो. Previously, in the previous projects, I have used HTTP, www and HTTP and all these things I have used. Just only hyperlink remove कर रहे थे. इस बार यहाँ पर I am using beautiful soap. तो it's not only a hyperlink. Anything which is related to the website, HTML tags कुछ भी होंगे सब निपटा देंगे अपन. Everything will be removed from your data for the cleaning purpose. Okay, ये हम कर लेंगे. उसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स, string dot punctuation. Okay, then extra white spaces if there are any extra white spaces. Okay, for example, two words are written, then they are having the white spaces, तो ये हम हटा देंगे. अभी भी जनरल काम चल रहा है. पंक्चुएशन जो होते हैं वो ठीक है. ओके, वो रिमूव करना. वाइट स्पेसेस आई नीड टू रिमूव. ओके, रिमूव बंगाली स्टॉप वर्ड्स. सो कॉर्पस डॉट स्टॉप वर्ड्स. ठीक है, तो बंगाली स्टॉप वर्ड्स वी कैन रिमूव. Now you are taking corpus dot stop words. So corpus you have already taken for Bengali. So you can remove the stop words of Bengali. ये आप कर सकते हैं. ठीक है. एंड बस इन सारे फंक्शंस को कॉल करना है एंड गिव योर टेक्स्ट इनसाइड इट. ओके, जस्ट कॉल ऑल द फंक्शंस विच यू हैव क्रिएटेड इनसाइड द क्लीनिंग फंक्शन. वो आप दे दो. ठीक है, तो वो रिमूव कर देगा. लेट्स सी, लेट मी रन दिस कोड. तो ये डेटा प्री प्रोसेसिंग क्लीनिंग का पार्ट है. आई एम रिमूविंग द टैग्स, आई एम रिमूविंग द पंक्चुएशन मार्क्स, आई एम रिमूविंग द एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस. बंगाली स्टॉप वर्ड्स में रिमूविंग ये कर रहा हूँ मैं. सो लेट्स सी क्या आपको रिजल्ट मिलता है. ओके, सो स्टिल द कोड इज अंडर एग्जीक्यूशन. It will perform all these things and then we will see the result. Okay, fine, done. And now here you can see the result df3. Still अभी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरी तो नहीं है, कम से कम बांग्ला लैंग्वेज आई डोंट नो, बट ये तो सक्सेसफुली चला होगा. आई बिलीव दैट दिस वर्क सक्सेसफुली एंड क्लीनिंग हुआ है डेटा का. एंड दिस इज व्हाट आई गॉट. ओके फाइन, दिस इज द क्लीन रिजल्ट. इसको करने के बाद नाउ इसका वर्ड क्लाउड वी वांट टू मेक. इसका वर्ड क्लाउड इफ यू वांट टू मेक, लेट मी पिक अप द कोड फॉर द वर्ड क्लाउड. वी हैव ऑलरेडी मेड द वर्ड क्लाउड ना. हियर इट इज. लेट मी कंट्रोल सी. ओके, and let me make the word cloud here for the cleaned data. Control V, take df3. Okay, and now make the word cloud. Similarly, I can create the word cloud by considering 0 and 1. So let me copy this code from above. Okay, just take this code. Previously I made the word clouds without any processing. Now I perform some processing and I'm expecting the word cloud to be made over this data. Okay, all right, fine. Control V. First, let's check the word cloud of the entire Bangla text, which is cleaned, and then we'll make the word cloud for label 0 and label 1. Let me change it df3. This is df3. This is also df3. This is df3. Okay, fine. Again, I got this word cloud. I hope there is a change in the word cloud. I don't know what's present inside it. Only the rectangular brackets we are able to see. What we are going to identify, it's not clear. But there is something which is built here. Okay. Same thing we can expect here also with label 0 and with label 1. Real and the fake. I have again run the code. Okay, so there are certain challenges.
इन लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। इंग्लिश का तो बहुत आसान है, इंग्लिश में कोई इशू नहीं, सब कुछ क्लियर होता है। ये दूसरी लैंग्वेजेस को आई पिक टू टेक अ चैलेंज, यही था कि यदि आपको बोल दिया गया, इफ़ यू हैव बीन टोल्ड कि आप नो इंग्लिश पे काम नहीं करना, वर्क ऑन एनी अदर लैंग्वेज, आपने करा है, यदि क्वेश्चन आता है हैव यू वर्कड ऑन एनी अदर लैंग्वेज, सो एटलीस्ट यू हैव टू शो सम प्रोजेक्ट, यस आई वी वर्कड ऑन अ लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज पर वी डिड वर्क, उसका हमें पता है इसमें ये टूल्स होते हैं। सो दैट्स व्हाट यू कैन मेंशन, फेक न्यूज़ क्लासिफिकेशन इन बंगाली, फेक न्यूज़ क्लासिफिकेशन इन इंग्लिश कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑल, अपने प्रोफाइल में बंगाली का कोई नहीं करेगा, कोई करेगा ही नहीं, भूल ही जाओ आप किसी के रिज्यूम में प्रोफाइल में देयर इज अ मेंशन कि उन्होंने बंगाली या किसी और लैंग्वेज पे क्लासिफिकेशन करा। ठीक है, आप देख रहे हैं, ये देखो ये रिजल्ट मिला, वर्ड क्लाउड फॉर लेबल 0 एंड लेबल 1। उसके बाद नाउ आई थिंक टॉप 30 वर्ड्स की बात कर रहा है ये। ओके, इट्स टॉकिंग अबाउट टॉप 30। सो टॉप 30 के लिए लेट मी अगेन रिमूव दिस थिंग, टॉप 30। ओके, वी कैन पिक अप from all the text, top 30, very simple code, control C, and we'll take the counter। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया है एंड कंट्रोल V, लेट्स टेक DF3। ओके, सो ये टॉप 30 वर्ड्स को प्रिंट करेगा। ओके फाइन, एंड लेट्स टेक टॉप 30 फॉर रियल एंड फेक ऑल्सो। ओके, ये कॉमन 30 वर्ड्स हैं, नाउ लेट्स टेक फॉर रियल एंड फेक, इसको भी आई एम कॉपिंग। ओके, सो कंट्रोल C। सो ये क्लीन करने के बाद का है, आफ्टर क्लीनिंग है ये। ओके, सो दीज आर द टॉप 30 वर्ड्स आफ्टर क्लीनिंग। आई होप काम बन गया होगा। ओके, ये हम हटा रहे हैं, इसको भी हटा रहे हैं, इसको भी हटा रहे हैं, कंट्रोल V, एंड हियर आई एम टेकिंग DF3, DF3। okay, this is df3, df3, okay, fine, and let me run the code। ठीक है, तो ये टॉप 30 आफ्टर क्लीनिंग फॉर रियल एंड फेक का इट विल डिस्प्ले, हियर इट इज। ओके, ये बता दिया उसने। and the next thing is you want to have the character count, so let me remove this thing and we can perform the character count। okay, so here is the character count for real, okay, real and fake, control C, let me take it here to control V। okay, character count, and I will be taking df3 and df3। okay, data frame 3 I am taking here, let's take df3, df3। okay, so just change the data frame, that's it, the code we have already made। okay, code we are already available with, so just change the data frames। okay fine, so I have removed this part, let me run the code। okay, so it will print, fine, it does, it printed, now you can see after cleaning there is a change। now the total character, average character is 1490 for fake, for real it is 1562। kindly compare, कुछ तो हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ है। अब देखो, पहले पहले 1787 था फेक का, रियल का 1848 था, नाउ रिड्यूस हो गया क्योंकि डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करा है हमने, तो क्लीनिंग तो हुआ है, चेंज हुआ है। ओके, वर्ड काउंट ऑल्सो वी कैन डू। ठीक है, लेट्स परफॉर्म द वर्ड काउंट, हियर इट इज 276 एंड 282, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है।
All right. So let's perform the word count. So character count we did. Word count भी कर लेते हैं. Let me put this code here, and again let me take df3, df3. Okay, and this is df3. This is df3. Okay, and word count. Okay, so here it's showing the 215 and 220. देखो कम हो गया ना, यानी वर्ड्स तो रिमूव हुए हैं क्लीनिंग में. That is the reason now we are having the less values 215 to 22. ठीक है, we can have the sentence count also. ठीक है, sentence count भी कर लेते हैं. Okay, so here it is sentence length. Okay, so that's what we can do. Fine, so here it is sentence length. This is df3. This is okay, fine. So 1539.64, this is the average length. ये हो गया. And now if you see df3, what we are having in the df3, बस यही है, टेक्स्ट और लेबल ही है. तो ये वाला सेंटेंस का तो मुझे अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है. एवरेज ये भी आई ऑलरेडी परफॉर्म्ड, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है. Now, here concatenation of Bangla and English language has been done. अब कॉन्कैटिनेशन, भाई मैं तो बांग्ला पे ही काम कर रहा हूँ ऑलरेडी. आई एम नॉट वर्किंग ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज. सो हियर द कॉन्कैटिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड बांग्ला, दीज टू लैंग्वेजेस हैज बीन डन. ओके फाइन. अभी रुकते हैं, इसको नहीं लेते, एंड फिर उसको डाउनलोड कर लिया उन्होंने, एंड फिर मैक्सिमम लेंथ निकाला, एंड देन फिर वर्ड टू वेक्टराइजेशन करा. ओके, एक काम कर रहा हूं. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम नॉट कॉन्कैटिनेटिंग. लेट मी रिमूव दिस पार्ट. इसको भी हम रिमूव कर रहे हैं. इंग्लिश है नहीं ना, हमने तो अभी वर्क बांग्ला पे करा है. इंग्लिश वी डोंट हैव. इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, फाइनल सेंटेंस सबको हटाओ. नाउ डू वन थिंग, इसको कर लो आप. Let us suppose the maximum length of a sentence is 1600, and let's prepare a list of it. ओके, ये टेक्स्ट की लेंथ है और मैक्सिमम लेंथ हम 1600 अभी अज्यूम कर रहे हैं. एंड लेट्स से दिस इज द प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द एस टी आर स्प्लिट. क्या करता है एस टी आर स्प्लिट? दैट मीन्स अब ये आपको बता रहा हूँ अभी. जस्ट लेट मी रन दिस कोड. ओके, यदि आपको टेक्स्ट की लिस्ट देखना है तो यू कैन डू दैट. कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, दैट्स व्हाट यू कैन सी. देख सकते हो. सो पूरा एंटायर जो टेक्स्ट है वो पूरा प्रिंट होगा. ओके, सेपरेटेड बाय कॉमा, ये देखो पूरा प्रिंट हो गया. इसको करना नहीं चाहिए था मुझे, आई गेस वो हैंग हो रहा है सिस्टम. ओके, सिस्टम गॉट हैंग्ड बिकॉज ऑफ दैट. बहुत बड़ा डेटाबेस है वो. ओके, दैट गॉट हैंग्ड टू डिस्प्ले. लेट्स सी यदि ये आ जाता है तो. ओके, इफ इट कम्स ना तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा, बस आपको शो करने के लिए बस मैंने वो लाइन को एग्जीक्यूट करा. ओके, सो एंटायर टेक्स्ट इज देयर. वो सेपरेटेड बाय कॉमा, वो टोकन्स हैं सारे. ओके, दैट मीन्स ईच एंड एवरी वर्ड. ओके, काफ़ी कुछ प्रिंट हो गया. ओके, फाइन. अभी वो टाइम ले रहा है, डिस्प्ले होने में भी टाइम ले रहा है वो. ओके, शायद करना नहीं था उसे कर दिया. आई थॉट दैट यू मे हैव अ डाउट. ओके वेट, इट्स आस्किंग फॉर ब्रेक हो रहा है वो पेज, अब डिस्प्ले नहीं कर पा रहा. I hope whatever we did so far is saved. The only thing now left is we are converting. We want to convert them into the vectors. What are the words? अभी फिर बोल रहा है वो.
ओके, एग्जिट कर रहा हूँ मैं। ओके, रीलोड। ठीक है, मैं रीलोड कर रहा हूँ। आई थिंक कहाँ तक हो गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आगे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या बचा है हमारे एंड पर करने के लिए। ओके, सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ स्टफ, ये सब कर लिया हमने, सब बना लिया, एवरीथिंग वी डिड। ओके, ये सब हो गया, फाइन। एंड ये मैं नहीं डिस्प्ले कराऊंगा। ओके, गलती हो गई, हटाओ ये। नेक्स्ट है, आपने क्या करा, यू क्रिएटेड वर्ड टू वेक्टर। भाई वर्ड टू वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी वर्ड को यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ वेक्टर फॉर्मेट। ओके, एंड दैट्स व्हाट वी डू इन एलएलएम्स आल्सो, इसको एम्बेडिंग बोलते हैं। दिस थिंग ना इज कॉल्ड एस एम्बेडिंग। ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आल्सो वी डू द सेम थिंग, वर्ड टू वेक्टराइजेशन, यानी कि यू आर रिप्रेजेंटिंग द टेक्स्ट इनटू vectors, numerics, continuous numerics, that's what you are doing. So whatever be the Bangla words are, okay, जो भी हो, अब पता नहीं ये क्या होता है, ठीक है, तो इसके वेक्टर बन जाएगा, लाइक .1, .2, .3, .4, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, अच्छा, मशीन लर्निंग में भी हम करते थे, वी डू दैट बाय यूजिंग काउंट वेक्टराइजर एंड TF-IDF, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाट वी डू, where you do separate the words, you create the column with each unique word present in the text. Okay, जो भी आपके words हुआ करते थे यहाँ पे, every unique word you have to take from the text, you have to prepare the column for them, and if they are appearing in a sentence you have to mark it at 1, and rest you have to mark with 0। तो ये भी वेक्टर ही है, ये भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ही है। लेकिन टीएफ, ये तो काउंट वेक्टराइजर है। TF-IDF क्या करता है, टर्म फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स अ वर्ड अपीयरिंग इन अ डॉक्यूमेंट, हाउ मेनी टाइम्स अ वर्ड अपीयर्ड इन डॉक्यूमेंट। इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स दैट वर्ड अपीयर्ड इन द एंटायर डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो ये होता है TF-IDF, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, TF मल्टीप्लाइड बाई IDF, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन में आते हैं, और इसको भी वो लॉग में लिखता है फिर, लॉग। ओके, खैर एनीवेज, अच्छा, ये जो वैल्यूज आती हैं कंटिन्यूस वैल्यूज आती हैं, कंटिन्यूस इन नेचर। उसी तरीके से वी आर ऑलरेडी हैविंग अ ट्रेंड मॉडल, देयर इज अ ट्रेंड मॉडल, द वन विच यू आर यूजिंग राइट हियर, वर्ड टू वेक, ये ट्रेंड मॉडल है, ये वर्ड्स को वेक्टर में कन्वर्ट करता है। ओके, इट्स अ प्री ट्रेंड मॉडल, दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग। पता होना चाहिए, शायद आपको है, या जो वॉट एवर ये यूज करा है यहाँ पर, बाई यूजिंग जनसिम लाइब्रेरी। ठीक है, अभी मैं इस कोड को रन नहीं कर सकता बिकॉज वो फिर शुरुआत से ही आएगा पूरा। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस पार्ट। तो ये वेक्टर में बदला, एंड जो भी वेक्टर हैं किसी भी वर्ड का वो प्रिंट भी करवा रहे हैं यहाँ पर, एंड सिमिलैरिटी निकाल रहे हैं। अच्छा, ये वेक्टर में करने से फायदा क्या होगा सर, ये वेक्टर में करने से फायदा क्या होगा भाई, पूरा फायदा तो यहीं से ही होगा। देखिए, मॉडल फॉडल वर्ड वर्ड तो इट विल नॉट अंडरस्टैंड क्या होता है, वो नहीं समझता तुम्हारी भाषा, वो तो नंबर समझता है, मशीन नंबर मशीन को कोई लेना देना नहीं, तुम्हें क्या लिखा, मशीन ओनली अंडरस्टैंड द न्यूमेरिक्स। ठीक है, सो व्हेन यू कन्वर्टेड अ वर्ड इनटू वेक्टर, okay, for example, you are having a word w1 whose vector is v1, you are having a word w2, you are having the representation is v2। अब आपको पूरा काम कर सकते हो यार तुम, LLM में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, ट्रांसफॉर्मर, भाई उसमें अटेंशन मैकेनिज्म होता है। यस्टरडे आई टुक सेशन, मैंने आपको इंफॉर्मेशन ऑल्सो आई शेयर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हुआ, पूरा अटेंशन और ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर ट्रांसफार्मर तो पूरा नहीं समझा पाया, सिर्फ अटेंशन मैकेनिज्म ही समझा पाया, एंड इट टुक मी 2.3 आवर्स टू एक्सप्लेन द अटेंशन मैकेनिज्म ओनली। ट्रांसफार्मर में तो मुझे 10 आवर्स लगते हैं कम से कम।
ठीक है, तो ये समझाया। और अटेंशन मैकेनिज्म में क्या होता है? अटेंशन मैकेनिज्म में हम डॉट प्रोडक्ट ही तो ले रहे हैं वेक्टर्स का, टू फाइंड द सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्ड्स। तो पूरा जो गेम चलता है ना वहाँ पे, वो मैट्रिक्स और वेक्टर का चलता है, मैट्रिक्स और वेक्टर। एंड इन दोनों का ही क्यों चल रहा है? वाई? बिकॉज इसी पर ही तो यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस। इफ यू वांट टू डू एनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यही तो हैं जिन पर कर सकते हो, इसके अलावा किस पे करोगे? सो यू कैन रिप्रेजेंट दीज वर्ड्स, ओके, these tokens, you can convert them into vectors and then you can perform either dot product or whatever, there are many things कर सकते हो आप। ठीक है, तो यही करा गया है यहाँ सिमिलैरिटी निकालने के लिए उन्होंने, ये शायद यहाँ वो देख रहा था कि इसकी वेक्टर की वैल्यू क्या है, इसका वेक्टर का वैल्यू क्या है, एंड देन कुछ सिमिलर, इससे टॉप 10 सिमिलर वर्ड्स कौन से हैं, ये वो प्रिंट कर रहा था। एंड फिर उन्होंने क्या करा? टोकनाइज करा, फिट ऑन टेक्स्ट करा, इसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करा। दैट्स व्हाट दे डिड। अच्छा, ये कहाँ करते हैं अपन? लेट मी टेल यू। ये क्या बोला इसने, इसको भी मैं समझा देता हूँ। ओके, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, समझना जरा ध्यान से, व्हाट द स्टेटमेंट दे हैव रिटन। मैं इंग्लिश की हेल्प से समझा रहा हूँ आपको। अ, पहला उसने करा, द स्टेप नंबर 1 इज टोकनाइज। Tokenize, this is the step number 1. That means you have to create the tokens of the sentences, मतलब वर्ड्स जो है आपको उसको वर्ड्स में ब्रेक करना है। तो फॉर एग्जांपल, इफ आई से माय नेम इज निर्मल, ओके, तो इसके टोकन क्या बनेंगे? माय, देन नेम, देन इज, देन निर्मल। इसके ऐसे टोकन बनते हैं। ओके, दीज आर द टोकन्स। उसके बाद आफ्टर क्रिएटिंग द टोकन्स, देर इज वन वन थिंग रिटर्न हियर, फिट ऑन टेक्स्ट। तो आप टोकन करिए, टोकन के बाद उसने लिखा फिट ऑन टेक्स्ट। फिट ऑन टेक्स्ट का मतलब ये है कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स आप इसकी वोकैबुलरी बनाइए, यू क्रिएट अ वोकैब। सो दिस इज योर आईडी नंबर एंड दिस इज योर टोकन। टोकन नहीं बोलते, अब उसको फिर वोकैब बोलते हैं। सो जैसे ये है माई, दिस इज नेम, दिस इज एस, और ये है निर्मल। तो उसने क्या करा? एक डिक्शनरी टाइप से वोकैबुलरी क्रिएट कर दी। दैट मीन्स हर एक टोकन को उसने एक इंटीजर रिप्रेजेंटेशन दे दिया। इट गेव इंटीजर रिप्रेजेंटेशन टू एवरी टोकन, 0 1 2 3। ये कर दिया उसने। और फिर इसको, इस इंटीजर रिप्रेजेंटेशन को वो कह रहा है मेक अ सीक्वेंस, इसको सीक्वेंस में बनाओ आप। तो ऐसे आपके पास बहुत बड़ा टेक्स्ट है, यू आर हैविंग अ टेक्स्ट, एंटायर टेक्स्ट पूरा है, वो सीक्वेंस बनाएगा। कैसा बनाएगा मालूम है? ऐसा टाइप करके। कितना बोला हमने? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस? मैक्सिमम लेंथ आपने बोली थी, यहां ऊपर लिखा है 1600 की। ये आपके ऊपर है, आपको 100 की लेंथ का बनाना है तो ये भी कर सकते हो आप। तो तुम क्या कर रहा है? वो बोल रहा है कि दिस इज योर सीक्वेंस नंबर 1, टेक 1600 टोकन्स। टोकन की इंटीजर वैल्यू डालना भाई यहाँ पे, ठीक है? दैट मीन्स 0 1 2 3 अप टू 1599। दिस इज सीक्वेंस नंबर 2, 1600 अप टू जो भी आता है 3199, ऐसे सीक्वेंस बन रहा है। दैट्स व्हाट इट टोल्ड कि आप सीक्वेंस बनाइए। मैं कम कर दूंगा उसको, 1600 तो बहुत ज़्यादा है, उसको 800 कर दूंगा मैं, या 100 ही कर दूंगा मैं। 100 का सीक्वेंस बनना है। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। तो सीक्वेंस जितने बनते हैं वो सेम लेंथ के बनते हैं, सेम लेंथ। सीक्वेंस ऐसा नहीं कर रहे अपन कि 100 का बना दिया, 200 का बना दिया, या 1600, नहीं। Sequence should be of same length. To remember again, I'm just for your knowledge, for your understanding, I'm repeating this thing. देखो, आपके पास जो टेक्स्ट होता है ना, द एंटायर टेक्स्ट, उसको टोकन में ब्रेक करने का
टोकन के बाद वोकैबुलरी क्रिएट करने का, दैट इज इंटीजर अनोटेशन ऑफ दीज टोकन्स। उसके बाद एम्बेडिंग करते हैं। एम्बेडिंग यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है, ये वेक्टर्स। अभी खैर यहाँ एम्बेडिंग अभी नहीं करा उन्होंने। they what I think is they are going to use LSTM मॉडल, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो LSTM के अंदर एक एम्बेड, उसके पहले अपन एम्बेडिंग लेयर का यूज करते हैं, वी डू हैव एन एम्बेडिंग लेयर। तो हम ये वोकैब को ही वी विल गिव एज एन इनपुट टू द एम्बेडिंग लेयर टू प्रोड्यूस द आउटपुट। वो कर देगा, लेयर होती है हमारे पास। ठीक है, तो इतनी बात है। अब मेरे पास मॉडल बचा है बताने के लिए, तो दैट आई विल टेल। Have you find interesting this particular topic or not? Please tell me. Does this catches attention or attraction or not? That you are working on different language and you're looking to explore the different language. तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दी। ओके, कुछ नया भी आपको, हाँ, यूनिक है, क्योंकि बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन अ लैंग्वेज अदर दैन द इंग्लिश, ऑब्वियसली इट्स यूनिक, आपको नया ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अब इस पे अपन मॉडल कैसे लगाते हैं, सीधा उसने खेल कर दिया, भाई तुम्हारे पास जो भी वर्ड हो कोई इशू नहीं है, आई कैन मेक अ वेक्टर ऑफ देम, और वेक्टर बनाने के बाद मैं टोकन वोकन क्रिएट कर कुरा के और मैं उसको सीधे मॉडल में देके क्लासिफिकेशन कर दूंगा, यही बचा है। तो अब आप कोई सी भी लैंग्वेज उस पर ऐसा खेल कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट, कल देखेंगे इसे, लेट मी स्टॉप इट।